Namaskar. Very warm welcome to all the viewers and students in this live interaction of CIT NCERT. मैं हूं रेणु भट्ट आपके साथ और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैथ्स का सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉनिक सेक्शंस पार्ट सेकंड पे। पार्ट फर्स्ट पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल जो है NCERT ऑफिशियल। आप देख रहे हैं eVidya चैनल नंबर 11 और कॉनिक सेक्शंस पार्ट सेकंड पे बात होगी। क्या होता है कॉनिक सेक्शंस और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिसेस बीना प्रकाश, यू आर सीनियर PGT मैथमेटिक्स फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। वेरी वार्म वेलकम मैम। Good evening. Thank you, Renu ji. And good evening to all my learners. यस और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें तो लेट मी गिव यू सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन इन केस यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट। आप हमें हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कॉल करके। हमारा टेलीफोन नंबर है 8800 440 559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class11@cit.nic.in। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं यानी कि NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और हमारे एक्सपर्ट से अपनी सभी बातों का, प्रश्नों का जवाब पाएं। तो मैम हम आपके पास आएंगे क्योंकि हम इसका पार्ट सेकंड ले रहे हैं, कॉनिक सेक्शंस पार्ट सेकंड। सो वी वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम द ब्रीफ ऑफ पार्ट फर्स्ट मैम। कॉनिक सेक्शन पार्ट फर्स्ट के ब्रीफ के साथ हम शुरू करना चाहेंगे मैम। Sure. स्टार्ट किया था हमने जैसे कोनिक सेक्शन। द वर्ड इज कोनिक सेक्शन, दैट इज इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन। तो इसका डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में थ्रू वीडियोस दिखाया था। हाउ वी हैव कट, जैसे ये दिख रहा है ना, एक प्लेन, व्हेन अ प्लेन इंटरसेक्ट्स अ डबल राइट सर्कुलर कोन एट डिफरेंट एंगल, दैट इज ये डबल सर्कुलर कोन है। कर्सर दिख रहा है आपको रेणु जी? जी मैम। डबल सर्कुलर कोन है। Now they are right, that is perpendicular to the plane ground. अगर देखें तो it is upright, ऐसे straight रखा है, ठीक है। Now इस ऑब्जेक्ट को आप कट कर रहे हैं, आप विजुअलाइज करिए, आप इसको कट कर रहे हैं। तो कट करने का ये है, एक कट करेंगे तो आप एक प्लेन, आप बच्चों आप लोगों को ध्यान में, कोई भी आप ऑब्जेक्ट कट करते हैं, जैसे आलू को कट करेंगे तो एक सरफेस मिलता है आपको। एक कट करने के बाद एक रीजन दिखता है आपको, कट करके दो पार्ट में मिलता है, तो एक पार्ट में जो वो क्या रीजन होता है, जो शेप दिख रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया है कोन को हम कट करेंगे। कट करने का ये एज्यूम करो, ये जो ब्लू वाला जो दिख रहा है ये दिस इज अ नाइफ, ठीक है। इट्स अ प्लेन सरफेस, ठीक है। अगर ये प्लेन इस कोन को कट करेगा तो व्हाट ऑल शेप्स दैट वी गेट ऑन कटिंग इट, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो दैट डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए आप लोग सलाद काटते हैं, यू कट ओनियंस एट डिफरेंट एंगल्स, तो डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं अपने को। वही चीज होता है, हमने शेप्स लेने के लिए हम डिफरेंट एंगल्स में इस कोन को कट करेंगे। फाइन। नाउ जैसे फर्स्ट है ये जो प्लेन है, दिस इज इंटरसेक्टिंग दिस पार्ट ऑफ द कोन एट सम एंगल। ये जो एंगल दिया है दैट इज बीटा एंगल। सो द शेप्स दैट वी विल गेट, इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन दिस बीटा एंगल। उससे पहले ये अल्फा एंगल दिख रहा है आपको, ये अल्फा क्या है? दिस इज एक्चुअली द जनरेटर, दैट इज हाउ वी हैव मेड दिस कोन। वी स्टार्टेड विद दैट। आपके पास एक वर्टिकल लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन को हम इंटरसेक्ट करते हैं इन स्पेस, ऐसे स्पेस में हम इंटरसेक्ट करते हैं। दिख रहा है आपको जी, है ना? अब ये जो दिस इज वर्टिकल मतलब स्ट्रेट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। अब इसको हमने इसके ऊपर ऐसे इंटरसेक्टिंग बनाया, तो इट इज एट सम एंगल, ये एक एंगल है। और इस वाले पेन को मैं रोटेट कर रही हूँ एट द सेम पॉइंट। तो कैन यू विजुअलाइज, ऑब्जेक्ट बनते जा रहा है। देखिए एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये वही ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट यू सी। सो वी हैव जनरेटेड अ कोन बाय दीज टू लाइंस, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सिस, और ये जो लाइन जिससे विच इज मूविंग अराउंड अ पॉइंट about this is known as generator. तो that is जिससे हम generate कर रहे हैं। तो it is at one angle. That angle is alpha. This angle is alpha.
Now with this we have generated the cone. अब हम एक plane use कर रहे हैं and that plane is intersecting this two cones. Now the shape that we get depends upon the angle at which we are cutting that plane cone. ठीक है? So that's the angle beta we have. Now we see that we get different shapes as per this angle. If the angle is 90 degree, 90 degree means beta is 90 degree. Beta 90 degree मतलब वो जो प्लेन जो कोन है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करेगा, पैरेलल टू द प्लेन, नीचे से कट करेगा ऐसे. तो अगर आपने एक आलू लिया, वर्टिकल आलू, उसको शेप कट किया, तो व्हाट डू यू फाइंड? जो सेक्शन जो दिख रहा है दैट इज द शेप ऑफ अ सर्कल. तो दैट इज हाउ वी गेट अ सर्कल. On the other hand, if you cut it at some angle, इस एंगल से कट किया which is greater than alpha but less than 90, तो ये एक शेप मिलेगा, that is elliptical. Now if that angle is equal to alpha, that is ये जो एंगल अल्फा है इस प्लेन के जनरेटर के एंगल से इक्वल ले लेंगे, पैरेलल टू द जनरेटर. तो what we find is ये जो प्लेन है ये एक ही पार्ट ऑफ द कोन कट करेगा, either the upper side or the lower side. And the shape that we get is known as parabola. And finally the fourth type, that is fourth way of the cutting, is when the angle that we have is less than alpha, then in that case it cuts the cone at two parts and that is known as hyperbola. तो ये वाला पार्ट जो है मैंने वीडियो के थ्रू दिखाया है, बच्चों याद रिकलेक्ट करने देख लेना, लास्ट वीडियो में है ये चीज. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द शेप्स दैट वी हैव. अब क्वेश्चन ये है कि हमें कोई ग्राफ दिया है या कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसको हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ग्राफ से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. उसके लिए क्या करना चाहिए? वी रिक्वायर सम बेसिक इन्फॉर्मेशंस. लाइक हमारे पास अपने पास ये लाइन, दिस इज सपोज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. ये अपना प्लेन है, प्लेन में ये एक, व्हाट इज दिस, व्हाट हैव आई ड्रॉन, व्हाट हैव आई ड्रॉन, मैंने एक लाइन बनाया है. तो हाउ विल आई डिस्क्राइब दिस लाइन? द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लाइन इज द इक्वेशन दैट वी हैव. दैट इज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कारण हमने ये लाइन को ऐसा बनाया है. अदरवाइज वी कुड हैव मेड दिस पॉइंट, ऐसे भी बना सकते थे. तो हमने ये लाइन बनाया है विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज इधर इट हैज अ स्लोप. हमने ये लास्ट क्लास डिस्कस किया था, पहले बहुत पहले डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइंस में. तो वी हैव कंडीशंस टू मेक अ लाइन, पर्टिकुलर लाइन. ऐसे ही कंडीशंस हमें चाहिए टू मेक दीज ग्राफ्स. So what are the conditions that we require? How to get the equations of these graphs? That is what we are discussing. Like this definition, that's the second definition. First definition is to see the sections with the help of a plane that it cuts the two cones. Up we have some definition, logical definition होना चाहिए जिसके through we can define it. What is that? It is the locus of a point. That locus, word locus use हुआ है यहाँ पे. What is the meaning of this word locus? Locus is a set of points. It is set of points which satisfies certain condition. So what is that condition? एक हमने एक particular point P लिया है, इसके ऐसे सारे points use करेंगे which is satisfying the condition that its ratios of its distance from a fixed point. Fixed point को बोलते हैं focus, and from a fixed distance is always a constant. That is एक particular point है इस plane में, कोई plane में there is a point in this plane. This points distances we are finding with respect to two things. One is a fixed point. There is fixed point that's known as focus, and the other one is fixed line. So with respect to these two, we are comparing this point. So what is that definition? कि this point is such that its distance from focus and its distance from the line, it is a fixed ratio, and that ratio is known as E. E is known as the eccentricity. Eccentricity, fine. That's the word E stands for. Now, it's a ratio. Ratio means different lengths आते हैं, है ना? A P can move anywhere. Its distance from the fixed point F, distance from the fixed line is E. Now this E is a number. It's a number, it's some real number. What all it can be? It can be a 0, it can be equal to 1, it can be less than 1, it can be greater than 1. And depending upon that, we get different types of curves. If we have E as 0, then the shape that we get is circle.
If we get E as 1, the shape is parabola. E less than 1, it's an ellipse. E greater than 1, it's a hyperbola. So we have this information that whenever we have something related to conic section, we need to have one quantity known as eccentricity. What is eccentricity? It is a ratio. Ratio of what? Distance of a particular point or all points, which can be traced as a curve. All points from the fixed point and the fixed line is always constant. So that is the we have as definition. अब एक चीज है कि मैंने बोला फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है फिक्स्ड पॉइंट का नाम है फोकस. फोकस, दैट इज फोकस, विच इज रिप्रेजेंटेड एज एफ. फिक्स्ड लाइन इज एक्चुअली known, the name of this is directrix. That is the name of this fixed line. ठीक है. अब ये दोनों क्वांटिटी होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है इस फिगर में. थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने 3D विजन को मैंने 2D में बनाया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट एनीवे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. आप विजुअलाइज करिए एक कोनिकल ऑब्जेक्ट, एक कैप, कोनिकल कैप ले लीजिए, उसके अंदर दो टाइप ऑफ बॉल्स मैंने इंसर्ट किए. ये एक बॉल है छोटा वाला एंड ये बड़ा वाला. देयर टू बॉल्स, ठीक है. एंड इट इज सच दैट द कोन्स, द साइड जो है, दे एक्ट एज पैरेलल टेंजेंट. दैट इज इट इज इंसर्टेड ऐसे फिक्स कर दिया है, उसके अंदर रख दिया है ताकि द साइड्स दे एक्ट एज टेंजेंट्स. फाइन. नाउ व्हाट विल दिस focus be? Focus is this point. I have marked this as focus. It is one focus, it is another focus. What is that focus? Focus actually is, एक हमने एक प्लेन लिया है, लेकिन फोकस इज ऑन वन प्लेन. आपको प्लेन दिख रहा है, शेडेड जो दिख रहा है वो प्लेन है. दैट इज टचिंग बोथ द स्फीयर्स. So the point where the plane touches both the spheres inside the cone, that is known as focus. ठीक है. And then this part, ये जो line बना है, ये line again it's a plane here. See what is that line? एक a sphere inside a cone. Wherever that surface touches the cone, the sphere or cone touch करता है, that is a circular surface that you have. वो एक plane है. That is a plane, and that plane, this is a plane that we have. This pink shade ये जो है, that is a plane, and this greenish shade is also a plane. ये दोनों plane जहां भी intersect करेगा, that is giving us a point. Likewise, ये जो plane है, when it intersects the line that we have as the axis, they give us directrix. So this is how we define these points, focus and directrix. ये just एक information है, ठीक है. Now फोकस सर्कल का डेफिनेशन था, ई जो है 0 है. ई मीन्स इट्स अ रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटी, दैट इज फोकस के बीच में. तो बोथ द फोकस दे लाई एट द सेम पॉइंट, सो देयरफॉर दैट ई इज 0. सो दिस वाज एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. सो द फर्स्ट कर्व दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास वाज सर्कल. अब सर्कल के लिए भी वी हैव टू फ्रेम अस इक्वेशन. अब वो इक्वेशन कैसे फ्रेम किया है? विद दिस एग्जांपल, दैट इज set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point. Set of all points in a plane which are equidistant from the fixed point. This fixed point जो है, that is known as a center, and the fixed distance is radius. अब आप देखिए इस फिगर को. This is a point A, that's another point. I'll name it as A1. So there are so many points A2. They're all points which are such a way that its distance from C. आप देखिए हर जगह ये distance जो रहेगा, won't this distance be same all the way? See, देखिए ये distance, ये distance, ये distance, they are all same. So this is the set of points that we have. So the locus is a circle. The curve traced is a circle. So definition of circle we derived from the definition, that is set of all points which are equidistant from a fixed point at a fixed distance, equidistant from a fixed point. So the fixed point is known as the center, fixed distance is known as the radius. Fine. So we derived the equation. कैसे equation derive किया हमने? Using this definition, that is एक point मैंने ले लिया है. I have taken one point, that is center. This is one point A, that's another point B. Its coordinates are H1 K1 and H2 K2. So what we have taken up? The distance of A from C. A from C.
C the center. Distance of A from C is 3 units. एक fixed unit ले लिया हमने. So this is what we'll write. यही लिखेंगे ना अपन. Distance of C and A कैसे लिखेंगे? Distance formula याद करके देखो बच्चों. Distance formula, distance is under root of x square, x minus x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब x1 x2 क्या है? 1. This is x1, it's x2. y1, y2. So it's h1 minus 0, k1 minus 0. So that comes out to be only h square plus k1 square. ठीक है? Likewise, isn't it also the same thing? That is CB. The distance of B from C will also be same because that's another point we find on that curve. So we have it as h2 minus 0 whole square, k2 minus. So h2, h1, they are all moving points. That's a locus. They are all moving points. उसको हमने generalize किया using x and y. We use this, that is this moving point we represent it in terms of x and y. That gives us the equation. So therefore the locus of the circle is x minus 1 whole square, which comes out to be x square plus y square equal to r square. So the general equation of a circle is x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square equal to r square is a general equation of a circle where center 0 0 and radius is r. Fine. ये हमने last class में किया था. Using this we discussed some questions. One question was when we had a center and the radius was given, we worked out with this, we got this equation. ये equation आया हमारा. दूसरा, what did we observe? The next thing that we observed was whenever we completed this expression, that is when we completed the value of this, we found that this is the expression that it takes place. That is x square plus y square plus 4x minus 2y minus 20 equal to 0. That is after simplification with the formula that we have. After simplification, it takes the form of a second degree expression in x and y. देखिए, it's a second degree equation in x and y. x and y का second degree equation है. x square plus y square plus this is quadratic form, this is linear and that's a constant. It's a second degree. But यहाँ एक चीज missing है. Whenever we write about any second degree equation, we write it in the form of ax square plus by square plus 2gx plus 2f. Before that, let me take up this term hxy. This is 2 times hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the general form of a second degree equation. So we find that when you compare with the second equation, we find that the equation of a circle is such that first thing, the a and b should be equal. That is what we always get. It is 1 times x square, 1 times y square. Second information is we will not get a term of x and y. See, do you have any combination of this? Is it giving us x and y? It will never give. So therefore, the general second degree equation comes out to be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now, we continue now. Now here we have the equation. An equation is given. How do we find the center? We have seen that the center happens to be negative of the coefficient of 2x, negative of the coefficient of 2y. So that's the center. And the radius part is g square plus f square minus c. This we discussed in the last class. यहाँ तक किया है हमने. Using this, we have defined the equations. Fine. Now we were to start with this expression. Now इस expression में क्या दिख रहा है हमें कि x square it is 2x square and 2y square. 2x square and 2y square says that it is not in the standard form. So how do we reduce it into the standard form? By removing this 2. And how can that be done? By dividing by 2. So when you divide the whole expression by 2, this is the expression that we get. 2x square, and that's x square plus y square plus 3x minus 4y minus 12 equal to, this will be minus 6 equal to 0. Now work out with this, it's plus 6 we have, and whatever value you get, this will be plus 12. Okay. So that will be the radius of the circle. Now we have another question which says that the circle's equation you have to find with radius as 5 unit and the center lies, that was a variation that we have. The center is on the x-axis and it is passing through 2 and 3. That's a particular point through which it is passing through. You can see this, I think this is very clear. Ye jo point hai, this is 2 and 3. This is, see that any point that we have, this is the radius of this side comes out to be, this is 2 units है ये, 2 units का दिया मैंने reduce करके रखा है. So it's passing through this 2 and 3 and its radius is 5 units. So how do we find the equation of the circle? So to find the equation of a circle, we need to find out what the center will be.
what will be the center of that? Since it is on the x-axis, any point on x-axis is represented as, any point on the x-axis, it is represented as A0. So what information do we have? We have the center is A0 and the radius is 5 units. So we frame the equation using this formula, x minus a whole square plus y minus 0 whole square equal to 24. And it's passing through 2 and 3. So we'll just put the value of x and y because it's a particular point through which the curve passes. And from this we find that a is minus 2. On solving it, we get a is 2 and a minus 6 also. So what is this saying? It is having a center at minus 2, 0 as well as 6, 0. And it is also passing through 2, 3 with the radius 5. The question was to find the equation of a circle. While solving it, we found that there are two equations. How is it possible? Just see the geometrical interpretation of it. See, in this case, what do you find? This is passing through 2 and 3. It is passing through 2 and 3. We are getting two circles. Just see the two circles which have the same radius, 5 unit. Here also it's 5 unit. This is also the radius which is 5 unit. This radius is also 5 unit. So don't we have the two centers? They are two different circles with two different centers. They are congruent circles with two different centers. That's all. So this many things, this is how we find the equation of the circle. Now another question was, we have the equation of a circle which is passing through 2 points, but the center is on another line. Again, go back to the equation that we have. That is, we have the center as 4x plus y. That center is lying on this 4x plus y equal to 16. Just substitute the value of center minus g minus f in this. You get this expression. And since the equation circle is passing through these 2 points, substitute the value of x and y as 4, 1 first and then 6, 5. Then we get these two expressions where we find that the two expressions are having 3 unknowns, G, F and C, G, F and C. And we have 3 equations also. These are the 3 equations. We have 3 equations, 3 unknowns. We have to solve the 3 equations in such a way that we can get the values of the 3 unknowns. So we prefer to go for the subtraction of these two so that you get only in terms of G and F, because the previous equation A is also in A and G and F. Hence, the 2 equations on solving, we'll get the value of G and F and we get the circle. So this is the circle we have. Now we are finding the equation of a circle which is passing through origin. It should pass through origin and has intercepts A and B on the coordinate axis. Now, it's having intercept on coordinate axis. What does it mean? We have a circle which is passing through this point. It is a point through which the circle passes, and intercept, that is the circle is also passing through this point, which I'll name it as B, which is 0B, and this is A, A0. Fine. So we have to make a circle which is passing through these 3 points. चलो सोच के देखो बच्चों कैसे करना चाहिए. A circle which is passing through these 3 points. आप ध्यान से देखेंगे तो we have one information, that is ये जो सर्कल पास हो रहा है इससे, so obviously सर्कल अगर पास होता है इससे, then this OA, I'll take the center as O. Bring in the information that you have studied in geometry so that it becomes easy for us to handle the question. हमारे पास ये 3 points है. We can always use this equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ये equation use करके, as we did with the first one, it is passing through 0, 0. एक equation बन जाएगा. Next one, it's passing through A0. You'll get another equation. Third one is 0B. It is giving us another equation, and that way we get the values of these unknowns G, F, C, because all these 3 are unknowns. So हमें निकल जाएगा ये value. But can we use an alternate way? So हमेशा whenever you get any question on coordinate, please make sure that you draw a graph, and you'll get the information in it. What is the information that you are getting from it? ध्यान से अगर देखेंगे तो this line AB will be the diameter. Why will it be diameter? Because we find that OA is perpendicular to OB, and if only AB is perpendicular, this OAB angle will be 90 degree. Otherwise, it's not. It's an angle in a semicircle. So इससे हमें क्या information मिल जाएगा? The center of the circle. Very easily we can get the center of the circle.
isn't it? So what will the center of the circle be? Center of the circle again याद करके देखो बच्चों, लास्ट ईयर हमने किया था 10th में, x1 plus x2 upon 2 that is 0 plus a upon 2, y1 plus y2 upon 2 that is b upon 2. So this happens to be the center. And what is the radius of the circle? How do you find the radius of the circle? मैम यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगी। आप बहुत ही अच्छे से ये सारे प्रॉब्लम्स और इक्वेशंस हमारे बच्चों को समझा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर थोड़ा आप पेस स्लो कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। जी मैम, है ना। Now ये देखिए AB जो लेंथ है, how do you find the length of AB? Length of AB is, we'll use the formula x2 minus x1, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमने 10th में किया, वो सेम फॉर्मूला से a minus 0 whole square, it is a square, plus b minus 0 whole square, that is b square. तो हमारा रेडियस भी आ गया। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के बजाय we can always take up the equation of the circle with center, that is it is x minus a on 2 whole square plus y minus b on 2 whole square, and that is equal to the radius square, which is half of under the root of a square plus b square का square. Now ये part clear हुआ है क्या बच्चों? Because I am taking this question in an alternate way. मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि सर्कल के 3 पॉइंट्स से इट्स पासिंग थ्रू. We can always use this equation. It's a general equation of a circle where we put the values of x, y as a0, 0, 0, 0b. तो हमारे पास a, g, f, c सब के तीनों के वैल्यूज मिल जाएंगे. बट अगेन फिर वापस डालेंगे तो हम क्या करेंगे, कभी कभी गलती हो जाता है. तो हमें हमेशा कोऑर्डिनेट के लिए आप एक चीज देखिए कि whether you can make a graph and get some information which you have studied in geometry. तो हमने ये जब ग्राफ बनाया तो we find that ये जो एक्सिस है, एक्सिस जो है x axis and y axis, they are perpendicular, and 0 is a point which is on the circle, a is also a point, b is also a point. So हमें क्या मिल रहा है, OA is a chord of a circle, OB is a chord of a circle which are perpendicular to each other. जब ये इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब ये जो chord AB जो है that will be the diameter. Angle in a semicircle is 90 degree. So मैंने वो concept use करके I could easily get the center faster and radius faster. तो डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया. अब नाउ वी जस्ट नीड टू वर्क आउट इट. वर्किंग आउट कैसे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट एक्स स्क्वायर. आई एम राइटिंग द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन दैट वी आर, दैट इज वी टेक वाई स्क्वायर फर्दर. देन वी हैव अ टर्म ऑफ एक्स विच इज माइनस ऑफ 2a upon 2x, that is giving us minus of ax. Similarly, minus of 2 times y times b on 2, that is minus of dy. And the third term that we have from all this is it's a square on 4 plus b square on 4, which is equal to, right side में क्या मिलेगा आपको, square of a square plus b square is under root of का square, it will be a square upon 4 plus b square on 4. So what is the equation of the circle that we are getting? It is nothing but x square plus y square minus ax minus by equal to 0, because these terms get cancelled. So this is the equation that we find in it. Fine. Now इसमें एक और information है, देखो ध्यान से. There is no term of 0 here. It is plus 0. So when there is no term of 0, says that the circle is passing through origin. Yes, it is passing through origin. So we don't have that constant c. So these were the things we had for circle. Now we move on to the next curve. Next curve जो है वो है parabola. अब जो parabola जो है, we have to define it. As I said, we have to define it. So which definition should we take up? We have to have a definition to trace the curve. So the definition that we are using is the locus of, again, points such that the ratio of the distance of point P from the fixed point F to its distance from the fixed line is E. And E's value, we have seen that when E is 1, it is a parabola. So we'll take this particular definition to get the equation of the curve. Fine? अब ठीक हो रहा है? जी मैम. रेनू जी? जी मैम. जी. Before going further, कुछ टर्म्स हैं जो मैंने पहले डिफाइन किया था, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन, वो 2 लाइन तो डिफाइन किए. इसमें भी कुछ टर्म्स डिफाइन करने हैं. सबसे पहले एक्सिस ऑफ अ कर्व. एक्सिस ऑफ अ कर्व मींस इट्स सिमेट्री, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज व्हेन यू टर्न द कर्व अबाउट अ लाइन, ओवरलैपिंग होगा. इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री. देन फोकस, फोकस कहाँ होगा? इट विल बी ऑन द एक्सिस.
there is one point vertex which is the terminal point. Shape of the parabola is something like U shape, इस तरह का. It is this way. It is this way. This is the shape of the curve. तो ये जो terminal point है, इसको हम vertex बोलते हैं. उसको vertex बोलते हैं. And directrix is a line which will be perpendicular to the axis. ये informations होने चाहिए अपने पास, ठीक है? So let's now take up derivation. अब आपने देखा है कि axis of the curve means एक line है. एक line means line का equation कुछ भी हो सकता है. Line is in general written as ax plus by plus c equal to 0. Directrix एक दूसरा line है इसमें, इस curve के लिए, which again we'll have to use another expression, that is मैंने इसको ऐसे लिख लिया dx plus ey plus f is equal to 0. अब आप देखिए यही ये जो लाइंस जो लिखने में ही हमारे पास इतने सारे अननोन्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे अननोन्स हैं. सो बाय द टाइम वी हैंडल दीज अननोन्स हमारे इक्वेशन हमारा हाथ से निकल जाएगा. तो क्या करना चाहिए? वील गो फॉर द सिंपलेस्ट इक्वेशन. We start with the simplest equation. Simplest equation means we'll assume that we have lesser value, that is a, b, we'll reduce it. D, e, f, we'll reduce it. So what is that we are trying to do is, look at this expression. मैंने क्या use किया है? ये Cartesian plane है. Cartesian plane में I've used x axis. This is the axis of the curve. Axis of curve. ठीक है? This is axis of curve. Now, you have a point on the axis that is focus, ये एक point. So now, any point on the x-axis, it will be A0. अब coordinate है, तो f should be having 2 points. हमने उसको reduce कर दिया, एक को reduce कर दिया to 0. So we have it as A0. ठीक है? Now next is directrix. Directrix is a line which will be perpendicular to the axis. So any line which is perpendicular to x-axis will be parallel to y-axis. ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे. इसके कारण इसका इक्वेशन भी जो रहेगा, it will be sum x is equal to something, एक वैल्यू हो जाएगा. That means ये जो लाइन जो था फर्स्ट ax, जिसको हमने सोचा था ax plus by plus c equal to 0 लिखने के लिए, we have now reduced that equation to, we have reduced it to y equal to 0, है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म. और ये जो लाइन है, it is sum x equal to which, इसको भी हमने dx plus ef plus c e लिखा था, उसको भी हमने reduce कर दिया as x equal to something. So we have reduced these elements a, b सब. So now we need to know what we should take up. Now हमने f लिया है a0, that's another point we have. अब देखिए, p is a point which is moving. तो general point moving जो point है, last class में बताया था, we take it as hk. ये एक particular point है. ये एक particular point है which is moving such that इसका distance from focus and distance from the directrix. Distance of a point from the line कैसे लेते हैं? We drop a perpendicular onto the line. एक perpendicular बनाते हैं line पे. Like directrix जो line है उसके ऊपर एक perpendicular बनाएंगे. तो फिर point PM is perpendicular to the directrix T. So the distance of PM, oh, this is PF. It is PF and that's PM. Sorry, this is particular for it. But this is for. Now, ये जो point है O. O is a point on the curve. ये हमने माना है कि O is a point on the curve. ठीक है? ये point है assume किया है vertex, which is origin of the Cartesian plane. ठीक है? Now, इस point पे we have a definition, that is O से distance F का, O का distance A से will be equal. That is a point on the directrix. ये देखिए ये perpendicular distance हो जाएगा, ये दोनों equal हो जाएगा. इसका मतलब O is the midpoint of A and F. So अगर हमारा A का F का coordinate A0 है, तो A का coordinate will be minus A0. This is because we have taken up this because हमारा equation of directrix भी हम A के साथ express कर सकते हैं. So what will the equation of the directrix be? It will be minus A. So the whole expression is now in terms of one unknown quantity, that is A. That is the reason हमने ये जो simplest form में लिया है. अब अपन frame करते हैं equation. Frame करने के लिए हमें क्या information चाहिए? कि distance of P from F and distance of P from the line, they are equal. ठीक है? So distance of P from F is PF, distance of P from the line is PM, that is equal to E. अब इसको expression में लिख लिए, under root of its the distance between F जो है that is A0 and HP is HK. So we have distance formula under root of x2 minus x1, h minus a whole square plus k minus 0 whole square is equal to PM.
Now what is this distance PM? PM is the distance of P from the line. तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें this length, ये जो length है, this length, this is h, ये h है ये, and this length it is minus of a. So what is this distance PM? PM, this is minus of a k. That's minus of a. So therefore what will this length be? PM, ये length क्या होगा? h के साथ a add कर दिया, because the total length I am talking about, ये total length, it is h plus a. So that is what we have written here. देखिए, it is h plus a. That's the distance of P and M. अब इसको जब आपने simplify किया है, we get this as h square plus k square minus 2h plus a square is equal to h square. We have to square it to remove the radical sign of the left hand side. Square करके we get this expression k square is equal to 4a by h. Now k and h एक particular point था, उसका हमने जनरलाइज कर दिया, तो लोकस क्या हो गया? y square equal to 4ax. That means एक पैराबोला which has a vertex at origin, a parabola which has a vertex at origin, focus on the x-axis, axis is x-axis, that is which is perpendicular to x-axis, that means it will be parallel to y-axis. For all such parabolas, the equation is reduced to y square is equal to 4ax. That's the equation that we have. ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ये था कि y equal to 0 is the axis, focus is a0, vertex is 0 0, and the equation of the directrix, it is x equal to minus a, x equal to minus a, which can be written as x plus a equal to 0. So हमारे पास ये इक्वेशन है कर्व का. इस इक्वेशन को देखते हुए हमने वी हैव रिटन द वैल्यूज ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज एक्स एक्सिस लिखा है. एक्सिस हमें कैसे मिला? वाई एक्सिस. देखो वाई अगर हमने दिस इज सिमेट्रिक, वी हैव एक्स, आपका जो भी वैल्यूज है 1, वी हैव वाई इज पॉजिटिव, एक नेगेटिव आएगा, तो वी हैव वी कैनॉट हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स. फॉर टू वैल्यूज ऑफ वाई, वाई इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 2 plus minus 2 root of ax. So the two values which says that y has two different values for same value of x. So है ना, y axis x axis symmetric, line of symmetry. So that's what we have. Then a0, this constant, that is coefficient of 4x, is the value of a, and vertex 0 0 directrix is x by उसका negative part. So this is what we find as the elements through the curve y square equal to 4ax. अब हमारे पास कर्व है ये y square equal to 8x. y square equal to 8x को कंपेयर करिए 4ax से. So 4ax से कंपेयर करेंगे तो what we get? The value of a as 2 मिल रहा है अपने को. It is 2 times of, it is, we have to express this as 4 times of something multiplied by x. So what is that something? That is the a that we have. Now with the value of a, ये मिल गया अपने को. Now can we frame all this? ये सब बना सकते हैं क्या? Axis क्या हो जाएगा? Axis is no change, it is y equal to 0. Vertex no change, it will be 0 0. Focus क्या हो गया अपना? 2 0. And directrix क्या हो जाएगा? x equal to minus 2, that is x plus 2 equal to 0. तो इस कर्व का, that is a curve दिया है, इस कर्व के सारे हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए, एलिमेंट्स जो चाहिए, वो मिल गया हमें. Now look at this question. Y square equal to minus of 8x. It was plus, we got this as plus. अब यहाँ minus of 8x, and we have to write it as 4 times. It has to be written as 4 times. So what do we get a as? What we have a as? देखिए 4 times है, this is 4 times ax. So we have the value of a. A क्या हुआ? It is minus 2. A comes out to be minus 2. थोड़ा सा आप सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए. a minus 2, a हमारा फोकस था which was on the positive side of x axis. अब यहाँ पे a minus 2 आया. इसके अनुसार एक्सिस विल नॉट चेंज, वर्टेक्स तो वही है 0 0. फोकस क्या हुआ? अब माइनस ऑफ 2 0 हुआ फोकस, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x, that is x equal to उसका नेगेटिव minus 2, that is x minus 2 will be 0. तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? जो हमने विजुलाइज किया था, लिया था हमने फर्स्ट पार्ट में,
कि एक्स एक्सिस और भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने फोकस लिया था एंड डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन था इट वाज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज इट वाज ऑन द नेगेटिव साइड. अब यहाँ पे पूरा सिस्टम इन्वर्ट हो गया. इज इट नॉट पॉसिबल? विद दैट एक्सप्रेशन इट इज पॉसिबल. दैट मीन्स द कर्व का डायरेक्शन बदल गया, कुछ नहीं हुआ है इसमें, कर्व का डायरेक्शन हैज चेंज. सी सेम चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे. फोकस क्या था अपना? माइनस ऑफ, it is minus of 2 0 and this is minus of 2 0 plus that becomes plus 2 0. So this is the equation of the directrix, that is x is equal to 2 and here focus is minus 2 0. So that means we can have different locations. The पहला वाला जो केस था but that was a particular case, just frame करने के लिए हमने, convenience के लिए हमने use किया है. So every time it is not that A will always, that is F will always be on positive, it can be anywhere. तो हमने ये example से बताया कि F can be on the negative x axis also. Now इसकी जगह अगर हमारे पास ये equation है x square equal to 8y, x square equal to 8y को compare करिए with y square equal to 4ax. आपको क्या दिख रहा है दोनों के बीच में? बच्चों ये आपको समझ में आना है, जस्ट ट्रांसलेशन. आपने पूरा x and y का सिस्टम को रोटेट कर दिया. x has changed to y, y has changed to x. तो जो चीज हम x in terms of y square equal to x बोल रहे थे उसको हमने उल्टा करना है. Getting it? उसको हमें उल्टा करना है. That means now the curve will be such कि it is the U shape जो दिख रहा है पैराबोला का, that will be facing upward. जो right side था अब upward facing हो गया. अब focus कहाँ हो जाएगा? It is on the y axis. एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस. दैट इज नाउ एवरीथिंग हैज बीन चेंज, दैट इज इन्वर्ट हो गया. जो x का है पोजीशन वो y का हो जाएगा, y का पोजीशन x में हो जाएगा. नाउ फोकस वाज a0, नाउ इट इज 0a. डायरेक्ट्रिक्स वाज x इक्वल टू, नाउ दिस विल बी y इक्वल टू. सो दिस इज हाउ वी हैव द चेंज सिस्टम. सो इसके अनुसार व्हाट विल द व्हाट एक्सिस बी? एक्सिस विल बी x इक्वल टू 0. वर्टेक्स नो चेंज, 0 0. फोकस क्या हुआ अपना? 2 0 2. इट्स ऑन द y axis, so it is 0 2. And directrix क्या हुआ? That will be y is equal to minus 2, that is y plus 2 equal to 0. A similar thing is seen when you have the equation as x square equal to minus 8y. Minus 8y. अब यहाँ पे भी it is, पहले हमने x and y को इन्वर्ट किया, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्वर्ट हो गया. So now it's a parabola facing downwards. Facing downwards. Axis is still y square, x square is equal to minus 8y. So when you compare it with x square equal to 4ay, we find that जो a पॉजिटिव इधर था वो नेगेटिव हो गया. So that's what we have. A as minus. तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? Vertex, first thing is vertex. Vertex is still 0 0. Axis क्या हो जाएगा? Axis will be x equal to 0 and then focus जो part हैगा that is 0 minus 2 and therefore directrix क्या हो जाएगा अपना? y is equal to 2. तो these are the information. तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्ट? हमने पहले कर्व बनाया विद द बेसिक इंफॉर्मेशन, दैट इज हमने जितने भी अननोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस किया बाय टेकिंग एलिमेंट्री एक्सप्रेशन, दैट इज वर्टेक्स को ओरिजिन बनाया, फोकस को एक एक्सिस में लिया, एक्सिस को हमने एक एक्सिस ऑफ द कर्व लिया है. तो ये सब कंडीशन यूज करते हुए हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्म एन इक्वेशन. नाउ वी आर फॉर्मिंग इक्वेशन. अभी हमारे पास इक्वेशन था उसमें से हमने एलिमेंट्स ढूंढे, अब हमें उल्टा बनाना, दैट इज वी हैव टू फॉर्म इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? द वर्टेक्स इज गिवन. ठीक है, वर्टेक्स इज गिवन. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एज्यूम करो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन. अब इसमें दिया है वर्टेक्स ऑफ दैट कर्व इज 0 0. दैट्स अ वर्टेक्स ऑफ द कर्व 0 0. Focus is also on the x-axis. It is at the distance. That is, this is focus 3 0. Now we have to frame the equation, form the equation. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व बनाने का एक फॉर्मूला है, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, so we find that this is having the focus on the x-axis, so we use this formula y square equal to its positive side, so y square equal to 4ax.
सो इक्वेशन क्या बना हमारा सीधा, सिंपल सी बात, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3x दैट इज 12x. हो गया, दैट्स द इक्वेशन ऑफ द कर्व, बन गया, फाइन. नाउ वी मूव ऑन टू द next question. Now here vertex is 0 0, x equal to 4 is the equation of the directrix. Again x equal to 0 is the x equal to 4, हमारा कार्टेशियन प्लेन है. We have x equal to 4 as the directrix. अब x equal to 4 is the directrix, so where do we find the directrix? फोकस नहीं दिया हमारे पास, 0 0 वर्टेक्स तो दिया है, दिस इज वर्टेक्स 0 0, ठीक है. नाउ x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मीन्स व्हाट विल इट बी? What will it be? X equal to 4 is the directrix. That means we have a line. We have a line which is such that x is equal to 4. So if I take this coordinate as 4 0, so this happens to be the line which is known as the directrix. This is the directrix which is x is equal to 4. And as I said, the directrix is a line which is perpendicular to the axis. Focus यहाँ है. This is the line which seems to be perpendicular. That is, x-axis is the line which is looking like perpendicular to the directrix. Definitely, the focus will be on this line x-axis because vertex यहाँ है already. So we have a focus on the other side of vertex. Why it's on the other side? Because that's what the definition says. That is, that's a point on the curve. Its distance from the directrix, that is ये length और ये length दोनों same होगा. So where is that point? Where should we mark that point F? The point that we know as F, that's a focus. Where should that be marked? Where should that be marked? This point comes out to be 4 0. So where should it be marked? At the equidistant, but it's on the negative side. So we have it as -4. So what will the shape of the curve be? Focus is this, vertex is this, axis is this, that is directrix is this. Isn't this the shape of the curve? So that means अपना equation क्या हो जाएगा? Y square is equal to minus of 4 times of 4, that is 16. So this is the equation of the curve. Okay, we have used the formula, that is y square is equal to minus of 4ax, where a is 4. Okay, either you use a as 4 or focus as minus a. That is, you can rewrite this as 4 times minus of ax. So a times हो जाएगा, negative हो जाएगा. Got it? Now we move on to the next question. रेनू जी, अब क्लियर हो सकता है क्या, लग रहा है क्या आपको? Yes, ma'am. है ना? Ma'am, here let me tell you that we have 5 more minutes left for the session, ma'am. 1 minute, just a minute. Now, here what we find, the next question similarly is origin is at 0 0 and this is the axis. Fine. This is the axis. Directrix, equation of directrix, y equal to 2. Y equal to 2. What is that line which is y equal to 2? Y is equal to 2 is a line which is parallel to x-axis. This way, it's parallel to x-axis. Y is equal to 2. That means this point is nothing but 0 2. Now, where should the focus be? As we see that vertex is at 0 0, so focus definitely should be at a distance same as that we have at the directrix line. So therefore, this point will be minus 0 2. So the shape of the curve will be inverted. That's the shape. So what is the equation of this? It's minus of 8y. Equation of the curve will be x square equal to minus 8y. Okay, now let me take up this question before we wind up. Now here we have a situation where the focus is not the origin. Focus is 1 0 and vertex is 1 0. So that means it is not the simplest curve. We have to now see. So this is how we will see through the diagram. We have seen that the point that we have as the vertex is 1 0 is actually on the x-axis. It's 1 0. This happens to be vertex. Now the point that we have as y focus is 5 0. It is 5 0. This is 4. So how did we frame the equation of a axis? What will the equation of the axis be?
which line will be known as the axis? The line which has the vertex as well as the focus. So isn't it this line? It's slightly okay. I think it's okay. This is the line that we have, that is x-axis. So that means the curve that we have has its focus on the x-axis. Vertex is also on the x-axis. So where will the directrix be? How will we draw the directrix? A directrix, as the definition says, is a line which is perpendicular to x-axis. So we need to draw the directrix as something like this. It's perpendicular to x-axis. This way we'll have to draw the directrix. But it is not any line that we have to draw. We have to draw a line such that the point where the directrix and the x-axis they intersect will be equidistant from, that is, V should be the midpoint of that point we have. I'll name this as U. Fine. This U should be equidistant, that is V is equidistant from U and F, means V is the midpoint of U and F. So where should that point be? Where should that point be? Isn't it this point, -3, 0? So how will we draw the line of the directrix? A line will be this. This is the line which will be the line for the equation of the directrix. So the equation of the directrix is, what is it equation? This will be the equation, that is the directrix we have. Now how do we draw the curve? The curve is such that it should pass through the vertex. This is the vertex. Slight difference here we have. We have this as the vertex. This is the vertex, and that's a point P. Now let us frame the equation. Let's construct the equation of this curve. What is this point P, which is taken as HK? So what we have is, it's a distance from P to F, and the distance from P to this directrix, that is same. Distance, length, P, I'll name this as M. So we have, by the definition of the parabola, we have distance of P from the line directrix, that is PM, is equal to the distance of P from the focus, that is PF. Now, what will the equation be? This is a coordinate HK. So what will it be? HK, PM, distance of P and M, that is, what will this distance be? This total distance that we find is, this is H and that's 2, this is H plus 3. So we have this as H plus 3, and distance of P and F is H minus 5 whole square plus K minus 0 whole square is K square. Let us solve this. When you solve this, what we get? It's H square plus 6H plus 9. And here we come across H square plus minus 10H plus 25 plus K square. So let us rewrite this. Let's rewrite this on simplifying. What we get is this is H square gets cancelled with this, and we finally come across this expression K square is equal to this will be, take everything to the other side, that will come out to be 16H minus 16. So we have something common, which is 16 times H minus 1. So the general equation that we have is y square is equal to 16 times x minus 1, which is slightly different from y square is equal to 4ax. There's a slight difference in it. Right. So what is this saying? We have the shifting of the curve. We have constructed a curve which has shifted from origin. The rest is the same, that is, focus is on the x-axis, directrix is perpendicular to x-axis, but the rest has shifted. It's only the vertex has been shifted. The whole curve has been shifted. So that's how we now go into the next part of the question, that is, we construct parabolas with different situation. It is not necessary enough that we have focus on the x-axis only, vertex Ma'am, on the please x-axis. sum up. It can be anywhere on the plane. Ma'am, Okay? please sum up. We'll continue with this from the next class on. Okay, ma'am. Fine.
तो मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आपने इतने अच्छे से कॉनिक सेक्शंस 5 सेकंड पे हमारे सभी व्यूवर्स को जानकारी दी। आई एम क्वाइट श्योर ये पूरा सेशन उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच बीना मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अपने सभी व्यूवर्स को हम कहेंगे अभी आप कॉनिक सेक्शंस 5 सेकंड पर जानकारी ले रहे थे और जैसे मैम ने कहा कि इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में अपने। आप सभी को हम बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि हिस्ट्री के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूफी मूवमेंट। इस लाइव इंटरेक्शन में आप अपना साथ ज़रूर दें। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। आप बने रहें eVidya चैनल्स और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।